Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, we are studying here chapter number 10 currency, and in the previous class of this chapter we have understood how to prepare the bill. So today we will start with exercise number 10.2. We will solve here question number 1 and 2. So in question 1 and 2 both, first we are given with the details of the bill. हमें पूरी details दी हुई है bill की, उसके बाद हमारे पास format है, उस format में हम पूरा bill बनाएंगे. सो चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड किस तरह से बिल बनाया जाता है. हमारे पास जो आइटम्स परचेज किए गए हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए. नेम ऑफ द आइटम, द रेट ऑन विच इट इज परचेज, द क्वांटिटी ऑफ द परचेज आइटम, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट. अदर देन दिस वी शुड ऑल्सो हैव द बिल नंबर, द डेट, द नेम ऑफ द स्टोर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट लेट अस सी which details are given to us. So this is question number 1 of exercise 10.2. Hemant bought 8 kg of milk. So the name of the item is milk at the rate of 40 rupees 25 paise per kg. 3 kg of curd. Next item is curd at the rate of 60 rupees per kg. 2 kg of ghee. This is the third item at the rate of 450 rupees per kg, and 5 liter of buttermilk. So this is our next item at the rate of 20 rupees 75 paise from Vasudev Milk Dairy. कहाँ से लेके आए हैं वो? Vasudev Milk Dairy. So this is the name of the store. Bill number is 428 and the date on which the bill will be generated will be 29/10/2015. Prepare a bill with the above given information. So children, we will start preparing the bill. We will always need this information. तो हम पीछे आके चेक कर लेंगे कि क्या डिटेल्स हमें चाहिए. First let us start. सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? The name of the store, that is Vasudev Milk Dairy. इसके बाद हम bill number लिखेंगे और date लिखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट हियर. सबसे पहले देखिए यहाँ हमारे पास फॉर्मेट है बिल एंड कैश मेमो, बिल नंबर, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैज परचेज विल बी रिटन हियर, देन सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, देन वी विल डू द कैलकुलेशन एंड राइट डाउन द टोटल. सो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे वासुदेव मिल्क डेयरी. Now let us see the bill number and the date. Bill number और date हमारे पास है. So children, 428 is the bill number and 29/10/2015 is the date. So let us write down 428 is the bill number, 29/10/2015 is the date. Now we will write down name and address of the person who has purchased this. So this is Hemant. Okay, Hemant हम यहाँ लिख देते हैं. अब हम लिखेंगे सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ द आइटम्स. देखिए टोटल कितने आइटम्स हैं? फर्स्ट इज मिल्क, सेकंड कर्ड, थर्ड घी, फोर्थ इज बटर मिल्क. सो देयर आर टोटल 4 आइटम्स. लेट अस राइट डाउन 1, 2, 3 एंड 4. अब हम नाम लिखते हैं इनके. सबसे पहले है हमारे पास मिल्क, कर्ड, घी एंड बटर मिल्क. लेट अस राइट डाउन मिल्क, कर्ड, घी एंड बटर मिल्क. मिल्क, curd, ghee and buttermilk. Now we have to write down the quantity. कितनी क्वांटिटी में ये परचेज किया गया है, उसके बाद हम लिखेंगे रेट. देखिए क्वांटिटी सबसे पहले मिल्क की हम लिखेंगे, ये परचेज किया गया है 8 kg. देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 8 kg. इसकी रेट क्या है मिल्क की? देखिए एट द रेट ऑफ 40 रुपीज 25 पैसे पर केजी. 1 kg की हमें दी हुई है 40 रुपीज and 25 paise. We can write down in this way. Now next we will see for curd. So children, now let us write down the details of curd. He has purchased 3 kg at the rate of 60 rupees per kg. So in quantity we are going to write down 3 kg and the rate is 60 rupees पर kg. पैसे हमें यहाँ नहीं दिए हुए हैं. अब हम लिखेंगे घी के लिए क्वांटिटी एंड द रेट. देखिए घी के लिए हमें क्या दिया हुआ है? 2 kg. सो दिस इज द क्वांटिटी एंड द रेट इज 450 rupees, right? So we will write down 2 kg in the quantity
and 450 rupees in the rate. This is the rate for 1 kg. Now we have to write down details for buttermilk. Buttermilk की quantity और rate हम check कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर buttermilk purchased है 5 लीटर्स और 5 लीटर्स की रेट है 20 रुपीज़ एंड 75 पैसा. तो देखिए क्वांटिटी में आ जाएगा 5 लीटर्स और रेट में आ जाएगा 20 रुपीज़. लेट अस चेक द पैसा अगेन. दिस इज 75 पैसा. नाउ चिल्ड्रन वी हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट. देखिए आपको पता है क्वांटिटी 8 kg है, रेट यहाँ पर 1 kg की दी हुई है, तो हम 8 की किस तरह से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. सो वी विल मल्टीप्लाई हियर एंड चेक आवर कैलकुलेशन. सबसे पहले हम निकालते हैं 40 रुपीज़ 25 पैसा जो है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से. So 8 5s is 40, 4 here we have written, 8 2s are 16 plus 4 we will get here 20. 0 यहाँ आ गया है, 2 चला गया है रुपीज़ में, 8 zeros are 0 plus 2 we will get here 2 only and 8 4s are is 32. So this is our answer. This is 322 rupees and 0 paisa. Let us write down here 322 rupees only. So we can write down decimal and put zeros. Next we have curd for 3 kg quantity and the rate for 1 kg is 60 rupees. तो यहाँ भी हम multiply करके check कर लेते हैं. 60 multiplied by 3. What we will get here children? 3 zeros are 0, then 3 6s is 18. So the final answer is 180 rupees. This will be the amount. यहाँ हम लिख देते हैं 180.00. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर घी. घी यहाँ पर रेट है 450 रुपीज़. कितना केजी लिया है उन्होंने, 2 kg. तो 450 जो है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. लेट अस सी द कैलकुलेशन. 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. 2 5s is 10. 10 का 0 यहाँ आ जाएगा, 1 in the next house. 2 4s are 8. 8 plus 1 we will write down 9. So this is 900 rupees as the amount for ghee. 0.00 means 0 पैसा. नाउ वी हैव फॉर बटर मिल्क कितना परचेज किया गया है, 5 लीटर और एक की प्राइस कितनी है, 1 लीटर की प्राइस है 20 रुपीज़ एंड 75 पैसा. लेट अस डू द कैलकुलेशन हियर. देखिए 20 रुपीज़ 75 पैसा है 1 लीटर के लिए. हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 से. ओके, सो लेट अस चेक हियर. 5 5s are 25. 2 as a carry, 5 here. 5 7s are 35 plus 2 37. So this is 7 and here we have got 3. So 5 zeros are 0. 0 plus 3 is children 3 only. Now 5 2s are 10. So this is our final answer, 103.75 for buttermilk. 103.75. okay, so we have calculated amount for each of the item purchased. Now we have to calculate the final amount paid by the customer. So how we will calculate this? We have to add all the amount. So 0 plus 0 plus 0 plus 5 is 5 only. Next we have 0 plus 0 plus 0, then 7. 7. Now we have put the decimal because we have done the calculation for paise. Next 2 plus 0 plus 0 plus 3. So 2 plus 3 is children 5. Next we can check 2 plus 8 is 10. 10 plus 0 is 10 only, again 0. So यहाँ हम 0 लगाएंगे, 1 चल जाएगा as a carry. Now 3 plus 1 4. 4 plus 9 is 13. 13 plus 1 is 14 plus 1 15. So this is our final answer. This is 1505 rupees and 75 paisa, right? We can put the rupees here. अब इसे हमें लिखना होगा words में. This is 1000. Write down here 1505 only. Okay children, so here the details are already written for terms and condition, that is E and OE, that is error and omissions accepted. Goods once sold will not be taken back or exchanged. So first we have completed question number 1 of exercise 10.2. Now it's time to move on to the next question. This is question number 2. The details are given here. Bill number is 108 dated on 30th 10 2015 of Unnat Beej Bhandar Kanvas Bhimraj bought
5 kg of corn seed at the rate of 37 rupees 25 paise per kg. Item name is corn seed. Next we have 45 kg of urea at the rate of 35 rupees per kg. Next the item rate is urea. Next we have got and 1 liter of pesticide. Pesticide is the third item at the rate of 235 rupees per liter. Prepare a bill to above information how much money was spent by Bhimraj on the goods. That means children, Bhimraj is the name of the customer. So let us see the bill. You know the format. सबसे पहले हमें लिखना होगा bill number, date and the name of the item from where the items are purchased. So we know that the bill number is here 108 and from where they have purchased Unnat Beej Bhandar Kanwas. And the date is 30/10/2015. So let us first fill the details. Here we have the format for preparing the bill. First it is written bill and cash memo. First we have to fill the bill number. This is 108. Then we will write down the date. Date we have checked 30/10/2015. Let us write down here 30/10/2015. Right now we have to write down the name of the store. So the name of the store who is preparing this bill is Unnat Beej Bhandar Kanwas. So this will be written here Unnat Beej Bhandar Kanwas. Now here name and address is written of the customer. जो कस्टमर ये सारी चीजें खरीद रहा है उनका नाम है भीमराज. तो ये बिल बन रहा है भीमराज के नाम. यहाँ हम लिख देंगे भीमराज. So we have written the basic details. Now we will start filling all the details of the items purchased. First we will write down number of items purchased, then name of the items, quantity, rate and the amount. Let us see the quantity here. कितनी चीजें खरीदी गई हैं? 1 that is corn seed, second is urea, third is pesticide. So there are total 3 things purchased here. Let us write down 1, 2 and 3. Now we will write down children the name of the items purchased, that is corn seeds, urea and pesticides. So first we will write down corn seeds, then urea and at last pesticides. Now we will write down quantity and rate of each item here. देखिए quantity कितना ही खरीदी गई है. सबसे पहले corn seed के लिए लिखते हैं 5 kg. So 5 kg is the quantity. Rate क्या है यहाँ पर? Rate दी हुई है 37 rupees 25 पैसा. सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं 5 kg. इसकी रेट है 37 rupees and 25 पैसा, right? Yes. Now we will write down for urea. Urea की हम check करते हैं quantity and the rate. So this is urea. How much it is purchased? This is 45 kg. So 45 kg is the quantity. Rate दी हुई है यहाँ पर 35 rupees per kg. So first we will write down quantity 45 and the rate is 35 rupees. There is no paisa here. Now we will fill for pesticides. Let us check the pesticides. रेट दी हुई है 235 रुपीज पर लीटर और उन्होंने कितना लीटर खरीदा है? 1 लीटर ओनली. सो दिस इज द रेट. दिस इज 235. हियर वी विल राइट डाउन 1 लीटर and the rate is 235 rupees. So children, now we have to do the calculations to calculate the amount. हम हर item का total amount check करेंगे. किस तरह से? Quantity को जब हम rate से multiply करेंगे, here we will get the amount. So first it is 37 rupees 25 पैसा. इसे हम multiply करके check कर लेते हैं. So this is 37 rupees and 25 पैसा. Multiply करते हैं हम इसे 5 से. देखिए 5 5s are 25, 2 is here and then 5 here, 2 will be added as carry. So children, 5 2s are 10 plus 2 we will add as carry. This is 12, but 2 we will write down here, 1 will go again as a carry in the rupees column. Next we will add 5 7s are 35. Here it will be added. 35 plus 1 is 36. So here we have written 6 and here we have written 3. 5 3s are 15 plus 3 is 18. So our answer is 186 rupees and 25 paisa. Let us write down in the column.
186 rupees and 25 paisa. So this paisa we have written after decimal. Next we have urea is purchased in the quantity of 45 kgs and the rate is at 35 rupees. So we have to multiply 45 को हमें multiply करना है यहाँ 35 से. So we will start from 5 here. 5 5s is 25. 5 4s are 20 plus 2 we will add here 22. Next we will multiply by 3. 3 5s are 15. 1 again as carry. 5 we will write down here. 3 4s is 12. 12 plus 1 we will get here 13. Now we will add it 5. 5 plus 2 is 7. 3 plus 2 is 5 and 1. So the answer is 1575. Let us write down in the amount column. 1575 children. There is no paisa here. At last we have pesticides at the rate of 235 per liter and he has purchased only 1 liter. तो 235 को 1 से multiply करने पर हमें मिलेगा 235 only. Okay, now we have to find out the total amount. ये किस तरह से आएगा? We have to find out the sum. इन तीनों amount को जब हम add कर देंगे we will get the total amount. देखिए सबसे पहले हम calculation करेंगे पैसे के लिए. 5 plus 0 is 5 only. Next 2 plus 0 is 2 only. Now next column for rupees. 6 plus 5 is 11. 11 plus 5 is 16. 1 in the next house. 8 plus 7 is children 15. 15 plus 3 is 18. 18 plus 1 we will add as a carry, we will get 19. Again 1 will go as a carry. So at last column we will add 1 plus 5 is 6. 6 plus 2 is 8. 8 plus 1 as carry 9. Now let us see the last column. It is here only 1. So this is our final answer. This is 1996 rupees and 25 paisa. Children, this amount we have to write in words also. It will be written here. So we have to write down 1996 rupees and in paisa we have 25 paisa. So children, we have prepared the bill here and at last the terms and conditions are written here and here we have the signature. Okay. So children, you have very well understood how to prepare the bill. Here we have completed question number 1 and 2 of exercise 10.2. In the next class, we will complete the remaining questions of this exercise and our chapter will be completed. So keep on practicing, keep on learning. I will see you all in the next class. Thank you everyone.